just carry on with the All right. Is there anything we are waiting for? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible. Actually, our producer, he is facing some technical issues actually. Okay. So he is on it. Yeah, just few seconds. No problem. All right, good evening, everyone. So sorry for the glitch. So on behalf of our host, I'm going to continue. So good evening, everyone. We warmly welcome you all to our series of webinar, which is part 3. I thank every one of you for showing your immense participation here with us. Today, we have a very special guest with us, none other than Dr. Malvitha Jain. Dr. Malvitha Jain is a founder of Mankaa Academy, which is an institute of graphology and astronumerology. Mankaa Academy has been conducting various workshops, sessions, consultations through which they have reached thousands of masses worldwide and solved their problems, and even provides trainings, consultations, guidance to people from across the globe. Dr. Malvitha, the entire team Rail Bikas Manch wholeheartedly welcome you to this webinar. And thank you so much, ma'am, for collaborating with us today on this webinar. So without taking much time, I would like you to go ahead with the session. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Namaste. This is our Indian culture, and we also. Ma'am, please unmute yourself. Okay. Thank you so much, everyone, and thank you so much, RBM. Am I audible? Clear? Yes, you're audible, ma'am. Okay. Thank you so much, RBM. And I hope everybody is comfortable with mixed language, because I am just going to do the analysis in mixed form, Hindi and English both, because so that everybody can understand. And okay, first of all, I just have one question with everyone. What do you know about graphology, or we call it graphology also? So what do you mean by that? Anybody understand that, what exactly it is? Anybody can unmute and just say. No, ma'am, no idea. No idea. Okay. Next, anyone else? Yeah, good evening, ma'am. Yes, Sahil. Ma'am, actually, graphology, according to ma'am, graphology is a handwriting thing in which we have to determine this person character. Basically, it is used in forensic science and in crime and some crime novels. Because used to determine that's how a person's behavior and characters about this. If I'm not wrong. No, you are partially right, because forensic thing is totally different, because there, of course, graphologists help a lot. But yes, that's a complete science. That's a complete other training. But yes, graphology, somewhat you're right with that. Anybody else? By graphology, yes, ma'am. By graphology, we can understand to the some extent about the person's personality. Very well. Okay. Last. One more. Yes, ma'am. I think graphology is we understand the personality by the handwriting of the people. Yes, absolutely. Most of us, we understand this. Graphology is what? Study of the graph,
writing, whatever we have written on a piece of paper, we are just doing the analysis of that. So handwriting and signatures are subconscious mind patterns. We have two brains, everybody knows that. We have a conscious mind and the subconscious mind, right? So consciously we design our signatures, but handwriting is a subconscious mind pattern. Why? Because if in midnight also somebody wake you up and just ask that it is very important, just sign it or just write somewhere, you will write the same way, exactly the way you are writing it, right? So that means that clearly indicates it is subconscious mind pattern. Whether you are aware or not aware, you are going to make alphabet A like that only, B like that only, C like that only, right? So this is understood. So when we make it subconscious mind patterns and signatures, so what is the importance of that? The thing is, if in these formations, if you make any problem or deform those letters, so that is the place where we need to do the proper study, proper analysis. If you have correct alphabet formation, that means everything in your life is going to be smooth. Why? Because every letter has got some meaning. And when we compile all these letters, 26 letters, capital and small case letters, so all these letters, when we combine, they provide the complete personality of a person. They just talk about the strength and weaknesses of a person, that what are your positive sides and what are the negative sides. Is there anything which is enhancing factor, or if it is anything which is diluting? So there are so many parameters to it. There are so many things to it, that how we can do it. If we talk about graphology, when we talk about this, so normally people talk about this English language analysis. Yeah, English ke analysis karte hain. Why we do that? Because it has become a universal language. If you talk about Spanish, German, or other languages, so alphabet formation is still the same. And our handwriting is combination, because we are the combination of our parents. Nobody can deny this, right? So we are the combination of our parents. Our handwriting also is made of those strokes which talks about the female side of a personality and the male side of personality. Combination of these brings the complete clear picture of a person. So with the help of handwriting, we can just do the complete study, what is going on in that person's mind. So it tells the present state of mind. And when we write on a piece of paper, on a plain paper, we ask to write with any your choice of pen when you write it. So a paper is your 24 hours, because this has been, when we say handwriting is your present state of mind, so a day is made of 24 hours. And when on that particular those 24 hours you write something, this talks about how you are managing. That is the present state of your mind. If you make a dot also on a piece of paper, that also says a lot about this, lot about your personality, how you are making dot, whether your dot is getting spread or it is getting, differently you are making it. If in case of a dot, you are making a circle, or how you are doing it. So we see all these things in our dot formations, like in I dots and the small case letter J dots. We see that. So I hope I'm able to make you understand that what graphology is: study of the graph. We do not read the content. A graphologist never read the content, what you are writing. We only see how you are making the patterns. I have done so many analysis, thousands of analysis, but I have not read not even a single analysis, a single sample complete. At times we need to do certain lines जहां पर थोड़ा सा fall हो रहा होता है, deformations होती है, कुछ issues होते हैं. Those lines we need to read so that we can connect with the psychology of the person. Because psychology and graphology, they go hand in hand. Or in दोनों की combinations, if you know the deeper side, if you want to know the deeper side of the personality, we just connect with that. ठीक है, तो good strokes, bad strokes, that does not define the person is a wrong person or a right person. It only talks about because of the situations we opt certain, because of the conditions we opt certain things in our life, और जो हमें हमारे decisions में problem करता है. It is just as simple as that, right? समझ आया? Yes. Yes. Okay. So अभी हम लोग भास्वती के पास she had already collected so many signatures. Yes. There are some people who have submitted their handwriting pictures and signatures. Okay. So, Rishabh, you share the screen. So one by one, Malvika ma'am will analyze your handwriting and she'll tell you
And before that, Malvika ma'am is also organizing a workshop on 28th March. Wait, let me check the time. Yes, 28th March, 9 p.m. to 10 p.m. I'm sorry, 28th March, 9 p.m. to 10 p.m. So whoever is interested, you can join that workshop also. All right, so first participant is Kritika Biswakarma. Can you unmute yourself, Kritika? Good evening, ma'am. Good evening, Kritika. Actually, if you could just scroll a little up, I just want to see the bottom part of this, or maybe you can just fix it in a way so that the entire sample come in one screen only. एक ही स्क्रीन में आ जाए, उसको थोड़ा सा हाँ रिड्यूस कर दो उसका साइज, डन चलेगा. सिग्नेचर्स नहीं है इसमें, ओके, ऑलराइट, ठीक है. ओके कृतिका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो राइटिंग बोलती है, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर लाइफ, लेकिन सम फ्लक्चुएशंस आर गोइंग ऑन इन योर माइंड, एंड यू आर आल्सो पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड रिस्क टेकर टू. एंड सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो दिस शोज दैट शॉर्ट टर्म रिलेशंस विद पीपल आर वेरी गुड, बट लॉन्ग टर्म रिलेशंस या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की अगर बात करते हैं तो यू फेस चैलेंजेस विद दैट. Otherwise, you are a positive person, optimistic person. Somewhere deep down, बहुत छोटे हो गया साइज, थोड़ा सा आप इसका साइज इंक्रीज करें. सिग्नेचर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें. Kritika, are you married or single? I'm single. I'm a student. All right, Kritika, there could be a possibility you may be attracting a lot of proposals, a lot of, some attraction is there. People attract, or you may be going for if you don't mind telling all these things here. No, ma'am. Okay. It's okay, ma'am. Yeah. So the thing is, you attract opposite gender. So that is one thing. So most likely you want to, the deep desire you have inside for a partner, that you want to go for a love marriage or a person whom you know well. So ये एक aspect इसके अंदर आ रहा है. And you have certain goals in your life which you have in your mind. It's like making castle, thinking very much about those things. But in reality, if we talk about those goals, so in reality, they do not exist. Whatever you are doing, you are getting ordinary results for that. And social communication, of course, it is nice. You are well connected with your own personality, with yourself. But at times it becomes a little difficult for you to say no to others. And apart from that, confidence level, if I talk about, you have, raised your self-esteem a little high, but you are not able to work on that part. So the goals, the things which you think that in future you are going to do it, but in actual, these are there in your head only. It's actually not working anywhere. And apart from that, there could be a possibility you may be having little difficulty in understanding with your father as well. And mother ke saath, of course, it is fine, but you go by your own choices. Short-term relations, I had already mentioned, short-term relations, very good, but long-term commitments or long-term relations with people, you face challenges. All right, Kritika, anything you want to say about this? No, ma'am. But I couldn't understand that. How did you say all this? How I am able to... Yes, ma'am. Because many of things are matching with. The thing is, the formation you have selected. In fact, you are also a kind of person who give a lot of weightage to traditional values or your own people. You give, yes, ma'am. You give yes, a lot of value. The thing is, the way you have made those strokes, I do not say that these alphabets, actually the strokes formation, the way you are just moving your letters, how they are rotating, how they are just proceeding, the kind of pen you have selected, the kind of impression it is giving, the size as compared to your writing. So everything, this is the study which says about you. So with the help of signature, and signature is something which is just the tip of the iceberg. And if I do the complete analysis of the handwriting, it will take 20 to 25 minutes. But yes, here we just kept session for everyone.
for signature analysis. Writing, we require writing because after seeing the writing, we can only check exactly how your personality is going in public. And you face challenges in public. That's there. For short term, it's fine. Yes, please. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Next, please. Thank you, Kritika. Okay, so the next participant is Surbhi Paliwal. Yes, ma'am. Shri Paliwal. Surbhi Paliwal. Okay. Surbhi, first of all, I just want to tell you that you are a positive, optimistic person. Second person with the positivity and optimistic. Enthusiasm is also very high. And you have something in your mind that you want to go to achieve the higher goals. It's like you attract adverse conditions in your life, despite of you having a creative mind, creative thinking, but still there are certain things which is not going in your favor, and you're also sacrificing yourself in a lot of things, and it's like there could also be a possibility that you're married or unmarried. I'm single. You're single. Okay. So you have your mother's influence a lot on you. You may be taking a lot of guidance with your mother, and you may be taking a lot of suggestions. Could be possible you may be having a little difference of opinion with her, but despite of that, those opinion matters. And you are also having a lot of, let me just check it here. See, artistic and connectivity is there, but yes, you take a lot of time. You just start for anything. You take little time to start anything. So that is one thing here. And somewhere in your physical self, in your body, you may be facing little challenges. Could be possible कहीं hurt होता हो या pain होता हो या particular कोई segment में, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अचानक से चोट ना लग जाती हो. Could be possible, ऐसा भी हो सकता है. So true. So be you there? Yeah, so true. It's true. Okay. And Surbhi, it's like आप अपने of course आप student हो तो इतना money matters में इतना नहीं आएगा, but still you think whenever you need, if you have given some money या अपनी pocket money भी अगर अपने भाई बहनों को दे रखा है ना, तो you may be wanting कि जब आपको जरूरत है they'll return. You think it this way. It can be partially true because I have an elder brother, so I never give money to him. I always buy from him only. Yes, so yes, this will fit in because आप उससे पैसा खींचते रहते हो, तो वो खींचने वाली बात है कि whenever you need money, you drag it, किसी भी तरीके से निकाल लोगे पैसे. Yeah. But this is something which is giving you problem in your hormonal imbalance ला रहा है. If you have pimples on your face या फिर अगर कोई आपके साइकिल में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, this is badly impacting. तो ये ध्यान रखना. Okay? It's nothing like that. Like Very nothing good. like that. Yes. Acid formation बन रहा है क्या? Sorry? Acid formation, acidity वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है? Nothing. Very good. I just face the issue in legs only, but otherwise I'm like always fine. I just have the different type of structure of my body. That's it. Like my legs are different from my upper body segment. So yeah, that's the different about my body. All right. Otherwise, equally I fine. don't see that part here, so I think that's fine. All right. Thank you so much, Surbhi. Thank you so much. Otherwise, it's like you have said so many things a lot true about me. Thank you so much. Thank you. How are you so accurate, ma'am? I'm confused. Anyway, next one, Sukanya Kashyap. Please unmute yourself. All right. If you could just increase the size a little. Okay. Sukanya. Yes, ma'am. Yeah, Sukanya, when you wrote this sample, it's like you were getting a little distraction from the present moment, whatever you are doing.
It's like maybe at your home front or work front, something you want to bring some change or kuch shift of energy ja raha hai. It's like regular things what you are doing. It's like something new I just want to start, or maybe something new you want to go, you want to try. So this is one thing. And apart from that, okay, all right, you are taking a lot of responsibilities of your work, your family, and you are at times you feel exhausted with that, at your work especially. And if I say in your personal life, you you're putting a lot of hard work, you're putting a lot of hard work, and you do not see that when when you don't check actually whether it is a day or night. If you have any work, you just want to complete it, you just really want to complete it. Your intelligence factor is very good, and maturity level is also very high. It's like good maturity, understanding towards the subject. Whatever task you have taken in your hand, it's like you want to complete it, and you have that potential that you can guide people, and you can just in multiple folds you can explain things, and explain things in a way so that people understand actually, because you are the master of your trait. Whatever you have taken, whatever task, whatever learnings you have in your life, you have just taken it in such a way. But apart from this, are you married or single, Sukanya? Ma'am, I'm single. I'm a student. Okay. The thing is, here I see some issues with the, if you're seeing somebody, or if you have somebody in your life, so difference of opinion with the partner, difference of communication, or maybe some difference of thought process, that part is showing here. Your connectivity with your mother is too high, too strong bond. Your family, you have a strong bond. You always try to sacrifice and compromise for everyone. You do not see that when and how I need to do. If you think of anything that you want to give, you try to give your best. And you are also kind of personality that when it comes to public, you're always shy, and not exactly a shy, but yes, you are more towards क्या बोलेंगे उसको, कि आप और ज्यादा एक humble approach के साथ जाते हो. In actual, you may be having a very dynamic personality, but when it comes to the public or dealing with people, you just go like लोगों से ऐसे बात करते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, एक humble personality, एक बहुत ही generous तरीके से you just deal with people. But the thing is, अपने physical level पर अगर आप अपना weight management से related अगर कोई issue challenge face कर रहे हो, तो यहाँ पर exercise नहीं कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज है, और maybe doing, तो वो आपको trigger कर रही है यहाँ पर. You may be doing something like that. वो एक part इसके अंदर आ रहा है. And a good sign is a good sign only for a limited period of time. लेकिन जो यहाँ पे good trait है, वो आपको longer duration में थोड़े से challenges भी create कर सकता है. And may I know कब से आप ये signatures को form कर रहे हो? Ma'am, it's been almost, I guess, 4 years, 4 or 5 years. Yeah. Are you facing some challenges in your physical health, or body के ऊपर कुछ ऐसा आ रहा है? Yes, ma'am, I have hormonal problems as in PCOD. That needs to be taken care of. थोड़ा सा ध्यान रखो, because signature में आप attract कर रहे हो. Okay, ma'am. I just want to say, first of all, thank you so much for analyzing it. And secondly, there was not just there was not a single thing which is not true. According to me, all of what I've said is true about me, and my mind is blown away. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yes. All right, moving it to the next one. Khushi Upadhyay. Khushi, are you there? Yes, sir. Okay. All right. Khushi, you are very much connected with your family. अपने roots, अपने foundation, अपने parents के साथ आपका connection बहुत ज़्यादा strong है. And in fact, there could also be a possibility that you are too much dependent on them, or they. खुशी, आपकी तरफ से ना थोड़ा disturbance आ रहा है. You can just हाँ, ठीक है. आप जब क्वेश्चन पूछे तब आप अनम्यूट कर सकते हैं. Okay, the thing is, you're very much connected with your family and with your own people, and आप अपने decisions के लिए dependent हो उनके ऊपर.
कोई भी काम करना है तो ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट हो खुशी? Yes, ma'am. ओके, अब हो सकता है इसी वजह से योर डिपेंडेंसी इज टू मच, बट समटाइम्स इट लीड्स टू सम सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनसाइड, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, सफोकेशन होता है, व्हाई ऑलवेज आई हैव टू आस्क, सो दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड इनफैक्ट आप कोशिश करते होगे, अगर आपने किसी को कोई टाइम दिया ना दैट यू वांट टू रीच ऑन टाइम, कि आप पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच जाओ, अब पूरी जितनी भी कोशिश करो 1-2 मिनट लेट या थोड़ा बहुत लेट, वो वाला सिचुएशन हो ही जाता है आपके कितना चाहने के बाद भी, वो ऐसा होता ही है। एंड दूसरा, It's damn true, ma'am. और दूसरी बात ये कि फ्यूचर के गोल्स आपने बहुत कुछ सेट करे हुए हैं, यू जस्ट थिंक लाइक कि आई हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, योर सिग्नेचर शोज, योर राइटिंग शोज लॉट ऑफ पोटेंशियल इनसाइड, लेकिन उस पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कई बार, ये सोच के फ्रस्ट्रेशन होती होगी, एंड इनफैक्ट अननेसेसरी वरीज, या देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कोई ऐसी आप आयुर्वेदा या फिर कोई हर्बल मेडिसिन वगैरह का एप्लीकेशन आप कर रहे हो या आपके घर में होता हो और जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, तो वो भी एक यहाँ पर एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। लर्निंग एबिलिटीज भी अच्छी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो एंड यू जस्ट गैदर इंफॉर्मेशन। आपका स्टोरेज अगर बोले तो लर्निंग्स को स्टोर करने का जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट्स गुड। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है। इज देयर एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग विद द शोल्डर स्टिफनेस और बैक एक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? खुशी, you there? Yes, ma'am. Little bit in back. ठीक है, देखो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कुछ साइंस हैं, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं दो इट इज प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड ओनली, बट यस जिस दिन आपने लिखा उस दिन भी आपको थोड़ा बहुत होगा, वो आपकी राइटिंग के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, तो आप उस पर ध्यान दो। एंड दूसरी बात ये कि जो फ्यूचर के लिए आपके गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, गोल्स जो आप सोचते हो कि फ्यूचर में आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, तो वहां पर समवेयर यू आर stuck with the past incidences, past memories और past experiences। हो सकता है कि वो फैमिली के experiences हो, maybe your own experiences somewhere you are just thinking, and कुछ infections भी body के अंदर आ रहे हैं, that those infections are also reflecting here। और वो infection अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या फिर अगर स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, बट ये इन्फेक्शन है, अगर आपको पिंपल भी हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ स्टमक का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इन्फेक्शन आपको हो रहा है, तो जस्ट ध्यान दो इसके ऊपर। Ma'am, I'm shocked. All things are very true. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Kushi. Yes. I really need to know how you do this. This is so interesting. This is just after seeing the writing alphabets. Acha, ye Exactly, ma'am. We also want to know how you are doing it. definitely I'll explain it. I think the next participant is Rajisha Rani. Rajisha Rani. Are you there, Rajisha? Yeah, it's Rojisha. Oh, I'm sorry, Rojisha. Rojisha. Okay. Nice name, Rojisha. Okay, Rojisha Rani. Thank you, ma'am. वेलकम। ओके रुचिशा, देखो ये जो आपने राइटिंग लिखा है ना, तो दिस शोज दैट व्हेन यू रोट दिस यू हैड लिटिल pessimistic approach towards life, or maybe something was not going right in your life and you were feeling little sad from inside, तो ऐसा वाला फीलिंग इसके अंदर है। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि दैट इज अ परमानेंट स्टेट, कुड बी पॉसिबल। आप स्टूडेंट हो आप भी? Yes, ma'am. हो सकता है कि उस दिन मम्मा पापा ने किसी ने डांट दिया हो तो आप उस बात से सैड हो और फिर उसके बाद आपने सैंपल लिखा हो, तो ये मोमेंट्री भी हो सकता है बिकॉज प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है। अगर उस दिन आपको कोई ऐसी इंसिडेंस हुआ जिसमें आपको ज्यादा शॉक लगा तो कुड बी पॉसिबल, और इट कैन ऑल्सो बी अ परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड विच इज गोइंग ऑन। तो ये एक चीज है। दूसरा, आपका लाइफ में अपना बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करके चल रहे हो, you are trying your level best to maintain things कि जो भी जैसे चल रही है, and you know you are focused, you know that you need to reach somewhere, it's like you have some targets and you know that how to reach towards those targets, whether you like it or you do not like it, you have that thing that you are going to reach there। तो ये एक अपने माइंड में सेट है कि my destination is defined, I know my destination, और उसके ऊपर आप चल रहे हो। so this is one part। and रोजिशा के थोड़ा सा और जूम करना उसके सिग्नेचर के ऊपर।
यस, देखो इरिटेशन फैक्टर्स आ रहे हैं, सेल्फ इरिटेशन भी आ रही है, अदर्स इरिटेशन भी आ रहे हैं। इनफैक्ट अपने से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं विच यू डू नॉट वांट टू टेल टू पीपल, और ना ही आप किसी से इजीली डिस्कस भी करते हो। क्रिएटिव माइंडसेट है, क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा है, और पॉकेट मनी वगैरह अच्छे से मिल जाती है, या फिर उसमें थोड़ा सा बैरियर्स आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पॉकेट मनी, अगर आप मनी मैटर्स की अगर बात करो ना, तो मनी आपके हाथ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस के साथ आ रहा है, एंड अपनी जरूरतों के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस, थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। ओके, एंड इनसिक्योरिटी फैक्टर्स भी इसमें काफी आ रहे हैं। लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा, चाहे अपनी फैमिली का बोले, चाहे अपने फ्रेंड्स का बोले, या अपने पेरेंट्स का ही अगर ले लें, तो यहाँ पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है। समवेयर डीप डाउन यू फील दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू आर गिविंग लॉट ऑफ अफेक्शन टू द पीपल, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट, समवेयर वो फ्रस्ट्रेशन है। क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, क्रिएटिव एस्पेक्ट अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, और देखो पब्लिक में भी आप जा रहे हो ना, तो भी आप एक जिस जो फीलिंग्स आपकी घर पे है ना, जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, यू आर नॉट शोइंग इट। बाहर जाने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा बेटर फील होता है, यू फील कि अगर मैं बैल्कनी में भी खड़ी हो जाऊँ, या फिर अगर मैं 2 मिनट वॉक भी कर रहा हूँ, तो आई फील बेटर। तो ये वाला फीलिंग इसके अंदर आ रहा है। रोजीशा, आप बता सकते हो अनम्यूट करके। Yes, ma'am, it's so true. Thank you so much. ma'am. Thank you so much. I want to give you one tip here, because you are going with so many things inside. आप अपनी राइटिंग को ना Yes. थोड़ा सा असेंडिंग लिखना शुरू करो। जो लाइंस है ना आपकी, थोड़ा नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है। एवरी लाइन विच इज गोइंग टुवर्ड्स बॉटम, डिसेंडिंग है, फॉल है, उसको थोड़ा सा अप करना Yes, शुरू करो। नॉट मच, जस्ट 10 डिग्री। अपनी लाइन स्ट्रेट देख लेना, उसके ऊपर 10 डिग्री असेंडिंग, बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, ज्यादा मत करना। Okay. ठीक है, डू इट। राइटिंग करो विद ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन अवॉइड करो। Okay, ma'am. Thank you so much. वेलकम। Wow. Okay. Next, Aryaman. Aryaman. ओके, यस। आर्यमन का ककाती, am I right? कका, ओके। ओके आर्यमन, आपका देखो कनेक्टिविटी विद योर रूट्स, फाउंडेशंस, अपना पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, कनेक्ट हो एकदम। अच्छा, you just tell me one thing, have you written this on a A4 sheet or it is just a notepads जो हमारा छोटा होता है ना A4 का हाफ वाला, have you written this on that paper? I think जो नॉर्मल कॉपी है, मैंने जो उसका पीडीएफ बना दिया स्कैन करके। तो ये छोटा साइज है, चलो कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर क्या है, you also feel suffocated, you are trying maintain balance, लेकिन अभी भी फिर भी अपनी जरूरतों के लिए just go inside, and in fact अपने communication में sometimes you become little harsh and blunt also. You have intuitive abilities आपकी अच्छी हो सकती है। If you get any guidance, या अंदर से कोई inner feeling आती है ना, gut feeling आती है, so that gut feeling works for you if you acknowledge it properly. You are a creative person, you love seeing colorful things, new things. If you get any opportunity to see things, you try not to miss it. And apart from that, planning and execution part थोड़ा सा weak आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लानिंग, आप डे टू डे प्लानिंग इज गुड, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड इफ वी टॉक अबाउट द प्लानिंग, यू टेक लॉट ऑफ टाइम एंड you research a lot, you take consult with people that how you need to do things, and execution part में भी थोड़ा सा complete नहीं है, तो execution part भी आपका सही नहीं जा रहा है। You are also a student? यस मैम। Okay. देखो मेजरली आपने प्रिंट स्क्रिप्ट को ही यहाँ पर यूज किया है, हार्श ब्लंट भी हो रहे हो, लेकिन कभी कभी आपका कम्युनिकेशन सॉफ्ट भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर सिग्नेचर की बात करते हैं यहाँ पर कंप्लीटली, सिग्नेचर में बुकिश पर्सन हो, बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा पसंद है, अगर कोई कुछ भी मिला, आर्टिकल भी अगर मिला या नेट से भी अगर मिला कुछ, तो यू जस्ट ट्राई टू स्टडी दैट, वो उसको पढ़ना पसंद है। अपने आप को सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज अपने आप को किसी भी चीजों के लिए, यू जस्ट ट्राई टू डू दैट, एंड इनफैक्ट आपके ऊपर ना शाइन आती है। व्हेन यू गो इन पब्लिक, you get some sort of attention, but this attention is only for some time, it's not that fixed, or kuch complications, people may be saying it ki wo they are not able to understand you,
और सोशल सर्कल में आपको या अपने रिलेटिव्स के बीच में भी, अपने भाई बहनों के बीच में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करना हो सकता है कि चैलेंजेस फेस करते हो। इफ यू आर सीइंग समबडी, तो वहां पर भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द पार्टनर आ रहे हैं। फोकस, कंसंट्रेशन, लॉयल्टी अच्छी है, एंड इनफैक्ट आपका कोई भी चीज आप मिस आउट नहीं करते हो, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगेन आपका लोअर बैक का प्रॉब्लम इसके अंदर इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे स्पाइन, नेक के पीछे से लेके लोअर बैक तक, उसका थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप टू व्हीलर वगैरह चलाते हो तो यू नीड टू टेक प्रॉपर थिंग, मसाज वगैरह लो, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग हियर। And adverse conditions, again you are also inviting adverse conditions in your life. Family के साथ connectivity ठीक है, you are connected, but sometimes too much tied up, too much exhausting feeling आ रही है, exhaust वाली feeling आ रही है। And मतलब ऐसा होता है ना कि केज में कोई बंदा है और उसको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, and how to just come out of this situation, तो वो वाला situation self thing चल रही है वो। एंड कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, लक फैक्टर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लक फैक्टर के साथ भी कुछ ना कुछ यू जस्ट ड्रैग समथिंग, कुछ पास्ट मेमोरीज, पास्ट इंसिडेंट्स कुछ आ गए तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं माइंड पर। यस यस आर्यमन। You want to say something, whether am I right or you have something? Yes, sir, you are exactly right. आपने जो भी कहा as of now, it's exactly matching. Thank you so much, Arvind. Thank you. All right. So next, Ritu Diman. Yes, ma'am. All right. रितु कब से कर रही हो ये वाले सिग्नेचर्स आप? मैम स्टार्टिंग से जब से सिग्नेचर करना स्टार्ट किया है। कितना टाइम हो गया? मैम आई थिंक 2006 से, जब बैंक में परमानेंट किए थे, फिर उसके बाद कभी चेंज ही नहीं किया। All right. You are single? No ma'am, I'm married. Okay. देखो रितु, यहाँ पर these kind of signature they shows, अच्छी बात ये है कि आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है। लाइफ में कोई भी हर्डल्स अगर लाइफ में आए तभी भी यू हैव दिस पॉजिटिव आउटलुक दैट आई विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ऑलवेज हैव दिस गट फीलिंग। एंड फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोच के रखते हो। सेल्फ एस्टीम भी बहुत हाई है। सेल्फ एस्टीम इन द सेंस कि अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हो, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, यू नो इट फ्रॉम इनसाइड। चाहे भले ही उसका रिकॉग्निशन आपको पब्लिक में या आपके वर्क प्लेस पे नहीं मिलता, बट यू नो दैट आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, यू नो दिस पार्ट। क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है। दूसरा, डिवाइन गाइडेंस अच्छी है। इफ यू आर स्टक समवेयर तो आपको गाइडेंस मिल जाती है, कैसे भी आप निकल आते हो सिचुएशन से। बट यहाँ पर प्रॉब्लम एक आ रही है कि अपनी लाइफ में आप खुद ही जो प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, उसको आप हमेशा अपने आप ही उसको ट्रिगर करके बैकवर्ड ले जाते हो। बैकवर्ड इन द सेंस कि आप उसमें खुद ही अपने आप कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको पुल डाउन करना पड़ता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप खुद अपने अगर पेपर कहीं डाले हैं तो पेपर विड्रॉ कर लिए, या फिर अगर कोई आपने प्रोग्रेसिव अप्रोच के लिए कुछ किया है तो वहां पर आपने खुद ही अपने आप कुछ ऐसा कर लिया, या फैमिली प्रेशर्स की वजह से कुछ ऐसा कर लिया। सो यू आर नॉट गोइंग अहेड। आप जहां आपको ऐसा कई बार फील होता होगा कि यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेटर, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू। अगेन हो सकता है कि आप लव मैरिज या अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया हो, या लव अरेंज मैरिज भी हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे बात करें तो इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशंस या उतने सूदिंग रिलेशंस नहीं होंगे। एंड इनफैक्ट हस्बैंड के साथ भी आपको चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो कॉन्फिडेंस लेवल, या अगर आपके सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम आपका वीक है, क्योंकि एक फीमेल का जो सपोर्ट आता है ना, दैट कम्स फ्रॉम फादर, एल्डर ब्रदर, हस्बैंड एंड डिवाइन। तो यहाँ पर जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज नॉट वर्किंग इन फेवर। जो हमारे खुद अच्छे स्ट्रोक्स होते हैं, जो डायनामिक स्ट्रोक्स होते हैं, उन स्ट्रोक्स में आपने गड़बड़ कर रखी है यहाँ पर। एंड इनफैक्ट द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, अगेन यू आर ऑल्सो लाइक सुकन्या, कि आप एक हम्बल, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड पर्सन होके आप दूसरों के सामने प्रेजेंट होते हो, या अपने अंदर जो पोटेंशियल है, जिस तरीके का आप डायनामिज्म आपको शो करना चाहिए, वो डायनामिज्म शायद आप पब्लिक में स्मार्टली आप नहीं शो कर पाते, जिसकी वजह से पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मेंट फॉर। यस रितु। Yes ma'am, so true. Thank you so much. Thank you so much. Any tip for me ma'am?
बहुत सारी है, क्या करूँ, ये पूरा बहुत सारा हो जाएगा इसके अंदर। Okay. बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ये। I think we need to organize another session. Anyway, thank you, Ritu. Do you have any questions, Ritu? बस रेमेडीज पूछ रही थी मुझे ये तो एक चीज आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन हियर, देखो हैंड राइटिंग और सिग्नेचर ना दे गो हैंड इन हैंड। हम ये सोचे कि खाली सिग्नेचर को करेक्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छी कुछ चीज ला सकते हैं। यस, सिग्नेचर के अंदर हम डायनामिक स्ट्रोक्स देते हैं, लेकिन बात ये होती है कि राइटिंग के अंदर भी वो स्ट्रोक्स चाहिए। अगर सपोज करो कि आप एक घर में जाओ या आप अपने घर में किसी को इनवाइट करो, यू हैव लिविंग रूम ब्यूटीफुली डिजाइन, ब्यूटीफुल, लेकिन अगर आप कोई बोले कि आई जस्ट वांट टू सी द एंटायर हाउस, और उस केस में आपकी किचन भी गंदी पड़ी है और आपका बेडरूम भी गंदा पड़ा है, व्हाट विल यू विल मेक एक्सक्यूजेस कि जिससे वो अंदर नहीं जाए, है ना। तो वी जस्ट डोंट वांट दिस। हमें चाहिए कि कॉन्फिडेंस, आ जाओ कभी भी आ जाओ, कैसा भी सिचुएशन में आ जाओ, जैसा है वैसा देख लो। तो यहाँ पर वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो दैट ट्रांसपेरेंसी कम्स विद हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर के बैलेंस से आती है। सिग्नेचर इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड राइटिंग जो होती है वो आइसबर्ग के नीचे वाला पार्ट है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों को हमें सिंक करना रहता है। इसलिए इफ आई टेल यू एनीथिंग, आप उसको यहाँ कर लोगे एंड यू विल फील समथिंग गुड इज हैपनिंग इन माय प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन पर्सनल लाइफ में कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है वो होता ही रहेगा। तो दोनों को ही ऑल्टर करना रहता है, ठीक है। ऑल राइट, यस, नेक्स्ट जागृति, am I right? जागृति आचार्य, Jagriti Acharya Chaudhary. Okay. Jagriti, you there? आप हो यहाँ पर जागृति? I think she is not here. No problem. Next. Jupitora Kakati, I think. Jupitora Kakati. I'm sorry No if I problem. mispronounced. No problem, no problem. थोड़ा सा Are you there? zoom, थोड़ा सा zoom, हाँ. Jupitora, are you there? Okay, next ले लो, कोई बात Okay, move on to next one. Oh my God, it's me. My heart literally skipped a million beats right now. चलो, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, हाँ. Oh my God, no, don't do it. ना, it's okay, it's okay. अच्छा, बासुमती मेरे को ऊपर से दिखाओ थोड़ा सा सैंपल, थोड़ा I just want to see it from the top. ऋषभ, स्क्रॉल कर दो. इतना ही है. ठीक है. अब आप थोड़ा ऊपर ले लो इसको, हाँ, वेरी गुड. ओके, बासुमती, व्हेन यू रोट दिस राइटिंग, जब आपने ये लिखा, तो इट वाज लाइक you had your day did not start well, ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ हुआ था जिसकी वजह से you were feeling little low from My inside. entire day was messed up actually. है ना. एंड दूसरी बात, some sort of distraction is going on in your life, could be possible. Distraction, I'll tell you. Distraction in the sense, change of job, change of profession, change of or maybe just thinking about some person कि मैं उससे थोड़ा सा distract हो जाऊं, तो वो distraction इस writing के अंदर दिखाई दे रहा है. But the best part is, and you do not trust people easily. That is also one part. कुछ लोगों के ऊपर आपका ट्रस्ट अच्छा है, and somewhere you feel कि भाई सबके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती. There are limitations to it, and you do not make. Trust people. I'm good to everybody, but I don't trust people. I'm generally very sweet, but I'll not let them enter my personal space very easily. That's it. So it's like trust की बात आएगी तो you think 10 times before doing it. Friendship, of course, as you said, वो चलेगा हमारा. बाकी signature. देखो, सबसे पहले तो अगर हम किसी बर्ड को किसी केज के अंदर बंद कर दें तो वो कैसा फील करेगी? Suffocated. So this is what you are feeling. It's like you have potential, you want to fly, you want to go high, and you are not able to use your potential. And
And you know what? The worst part is when somebody criticize or when somebody say anything, you try to justify. You may be having limited friends because of your signature. Limitations आपने बना रखी हैं. No social outings, no social this thing. फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बात करना या लिमिटेशंस होगी फ्रेंड की. हो सकता है मुश्किल से गिनती का 1 or 2 फ्रेंड्स यू मे बी हैविंग, वो ही आपके साथ चल रहे हैं. या फिर हो सकता है कि अपने, और फिर ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल की, तो कॉन्फिडेंस लेवल है लेकिन उस कॉन्फिडेंस लेवल को शेक, रीचेकिंग की हैबिट आ रही है. इफ यू हैव डन समथिंग देन आल्सो यू जस्ट गो बैक एंड जस्ट रीचेक. एग्जामिनेशन भी यही करते होगे, पेपर जस्ट चेकिंग, एक बार कर लिया दोबारा चेकिंग. वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. you do not have any hesitation talking with the new people. कोई भी नया पर्सन आ जाए, you don't mind speaking with them. एक बार आराम से चले जाओगे उनके साथ बात करने के लिए. whatever you have, बहुत मेहनत काम कर रहे हो बट योर हार्ट इज रूलिंग योर ब्रेन. दिल आपको परेशान कर रहा है. एंड ऊपर से जितनी भी मेहनत से काम करो, देखो मनी बैग्स भी इसके अंदर बहुत अच्छे बने हुए हैं. मनी बैग्स हैं यहाँ पर, लेकिन वो मनी बैग्स आपने क्रश कर रखे हैं, तो जिसकी वजह से मनी का भी, या फिर अगर कोई जॉब में या कहीं पर अगर आप इंक्रीमेंट की भी अगर आप सोच रहे हो ना, तो वो आपको नहीं मिल पा रहा जिस तरीके का आपका पोटेंशियल है. एंड दूसरी बात ये कि सैक्रिफाइस कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा. कॉम्प्रोमाइज, किसी को कोई जरूरत है तो यू डोंट टेक अ सेकंड कि मुझे जो भी करना है. My God. मदर के साथ भी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत. अगर झगड़ा भी कर लोगे तभी भी उसके बाद शाम को जाके मम्मा आई एम सॉरी. No, actually, I'll correct you there. I don't share a great relationship with my parents. Okay. See, if you are not sharing it, that's fine. But deep down, you have this thing here. I have that desire that I wish I Yes. had a healthy relationship with my parents, but I don't have that. So I don't really care about it anymore. Since Actually, it is because of the formation you have made that is destructing it. Because the mother place, you have already destroyed it. Actually, ये the words which I used earlier also कि यहाँ पर कुछ destructive traits भी आ रहे हैं. तो you have this connectivity, deep desire inside that you should have good relations, but you're not getting it because you are in a cage and somebody points out anything, तो वो आपको problem करता है, frustration करता है. It's like sensitivity is too high. You are not able to take. I'm very emotionally sensitive actually. Sensitivity is very high. ठीक है, so here. I just have one question actually, just one question. I'm actually feeling like currently I'm stuck in a rut and I cannot move forward for some reason. Life, in every aspect of life, be it career or relationship or personal. So what can I do to fix that? Baswati, the first thing is complete analysis of the handwriting and signatures, and after that, because to go forward, to go for some corrections, we need to check 2-3 samples which has to be written in different timings, different moods, so that we will understand what kind of formation you are making. So this is something which needs to be treated. Procrastination के भी बहुत सारे traits इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं. Procrastinate है ना, तो अचानक मेरी नजर पड़ी तो I'm just telling you. So it is something which is pulling you back. And one thing I just want to tell you, this ये जो swing जा रहा है ना नीचे, this swing. So eliminate this. वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको नहीं बनाना चाहिए, but still if you are making it, कम से कम इस swing को तो हटा दो, because आप देखते हो ना spring के ऊपर किसी डॉल को अगर खड़े हुए देखते हो तो how does it work? हम कार के अंदर ऐसा वाला लगाते हैं ना, एक कार होती है ना नीचे, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, देयर इज अ डॉल, वो मूव करती रहती है चारों तरफ. तो यू हैव जस्ट शेकन योर बेस. आप बेस स्ट्रांग नहीं रखोगे. बेस इज व्हाट, बेस इज आवर फादर. अगर वो बेस हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो उस केस में हम हिलते ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग. वी डोंट सी एनीथिंग, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी. तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं. तो बहुत सारी, so I need to be stable from here. उसको यहाँ से दूर करोगे तो अपने माइंड से भी स्टेबिलिटी के पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्स नोट करें और काफी चीजें निकल के भी आ रही हैं. इट्स गुड. I think we need to have a separate session. It's a magical world actually. I have changed my life 360 degree. I have taken a U-turn. चलिए. I'm literally sweating right now. I'm shaking. I can feel the chills down the spine. Okay, let's move forward. नहीं तो मेरे पे ही रह जाएंगे हम लोग. Anyway, who is next?
Shivani Bahuguna. Shivani, are you there? Yes, yes. Hi, I'm here. All right. Okay. All right. क्या बात है सभी शिवानी यू आर आल्सो स्टूडेंट Yes, ma'am. ओके देखो आपका सफोकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है इस वक्त सफोकेशन हो रही है कुछ फ्रस्ट्रेशन मे बी ओवरबर्डन विद द थिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज and you are also you also want some space and you want to push that side कि जो pressure आ रहा है ना I just want to push and I just need some time for myself so that kind of situations or if you're looking for some job are you looking for some job या कुछ ऐसा हो रहा है या internship के लिए जा रहे हो ऐसा कुछ है क्या Not job, ma'am, particularly, but I am preparing for some entrances. तो उसकी तरफ आप जा रहे हो तो वो एक अपना सेट पैटर्न जो बना हुआ है डेली लाइफ में जो सेट पैटर्न है यू जस्ट वांट टू ब्रेक दैट कि मैंने जो अपना टाइम स्केड्यूल बनाया हुआ है आई जस्ट मेक इट प्रॉपर्ली तो वो वाला एक इसके अंदर फील आ रहा है एंड अदरवाइज इन योर लाइफ यू डू नॉट इंटैंगल किसी के साथ भी कोई झड़प आराम से नहीं लोगे अगर कहीं पर भी लगेगा ना कि दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं मेरी कहीं पे कुछ बात होने वाली है तो यू जस्ट टेक अ यू टर्न सेफ साइड अपने आप को बचा लेते हो सेफ साइड अपने आप को बचा के यू जस्ट ट्राई कि आप निकल जाओ उसके अंदर से ऑलराइट एंड हो सकता है कि लाइफ में आपको थोड़ा बहुत कोई पुश भी करता हो कुड बी पॉसिबल योर मॉम पुशेस कि थोड़ा पढ़ लो बेटा जल्दी सुबह उठ जाओ तो उस तरीके का सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकता है कि यू जस्ट नीड अ पुश थोड़ा सा किसी ने पुश किया देन यू आर ऑन योर ट्रैक तो वो एक अच्छा पार्ट इसके अंदर आ रहा है अपना बैलेंस अच्छा बना रहे हो लेट्स कम टू द सिग्नेचर पार्ट ओके अच्छा शिवानी आप ऐसा करते हो क्या कि अगर लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह इशू कराई यू थिंक कि घर पे आके मैं आराम से उसको पढूं आई हैव सफिशिएंट टाइम देयर कंफर्टेबली मैं अपने आप वो बुक्स वगैरह या कुछ भी जो मैटर है पढ़ने वाला तो आई कैन रीड देयर थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना सिग्नेचर का प्लीज जस्ट ओके ओके थिंकिंग अ लॉट अबाउट थिंग्स बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि यू नो व्हेन आई ऑन एंड आई डू दिस आई डू दैट बहुत सारी चीजें चल रही है मैं इसके लिए वो करूंगी इसके लिए ये करूंगी बट कैसे कर पाऊंगी वो वहां पर एक ट्रैप एक आ रहा है क्योंकि अभी ऑफ कोर्स यू आर अ स्टूडेंट तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही होगी फ्रेंडली पर्सन हो आप दूसरों के साथ अच्छे से कंफर्टेबल मिक्स हो जाते होगे एंथुसियाज्म लेवल बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का यू नो हाउ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है यू नो कि मुझे उसको कैसे यूटिलाइज करना यू नो दैट बट कम्युनिकेशन में एरर आ रहा है जब आप किसी से बात करते हो किसी को अपनी बात पहुंचाते हो पीपल टेक यू डिफरेंटली वो आपको एग्जैक्टली आपका क्लियर माइंड नहीं पढ़ते हैं दे जस्ट रीड द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स और उसको वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही लेते हैं समवेयर यू डू नॉट फील गुड फॉर दैट एंड दूसरी बात ये कि अगेन यू मे बी अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ ऑपोजिट जेंडर और हो सकता है कि कोई लव प्रपोजल या कोई ऐसा प्रपोजल भी आपको मिले हो तो वो भी एक बात इसके अंदर आ रही है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अटेंशन सीकिंग you automatically get attention from the people वो attention आ जाती है and you are also kind of person who you know you understand others problem faster अपनी problem है but still I understand others problem faster और उस केस में क्या होता है कि यू कॉम्प्रोमाइज आप वहां पर लोगों की हेल्प कॉम्प्रोमाइज तो ऐसा नहीं बोलेंगे बट यस यू ट्राई टू हेल्प पीपल तो वो एक सिचुएशन इसके अंदर जाती है एनालिटिकल एबिलिटीज अच्छी है कैलकुलेशन पार्ट कैलकुलेटिव अच्छी है हो सकता है मैथ्स की कैलकुलेशन वगैरह भी बहुत फास्ट आप कर लेते हो बट स्टिल बेस आपका भी थोड़ा वीक जा रहा है कॉन्फिडेंस लेवल में आप चाहे कितना भी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक अपनी एक अप्रोच आपकी अच्छी जा रही हो लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है ऑर्डिनरी रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़ा आप फेस कर रहे हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स लोगों के साथ रिलेशंस में भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो एंड इनफैक्ट हिच आती है कभी भी कोई बात किसी के साथ डायरेक्ट शुरू करने से पहले यू फील सम हिच थोड़ा हिच रहता है कि कैसे स्टार्ट करूं तो वहां पर एक थोड़ा until unless you don't feel comfortable तब तक आप स्टार्ट नहीं कर पाते हो एंड अपना थोड़ा सर्वाइकल का या शोल्डर स्टिफनेस का या अपना हेडेक का थोड़ा ध्यान रखना अगर ऐसा कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आई साइट के ऊपर भी आपका थोड़ा फर्क पड़े यस शिवानी एनीथिंग
मैम मैथ्स और ये हेडेक का भी मतलब पता नहीं बट बाकी चीजें काफी ज्यादा सही थी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, देखो राइटिंग के साथ जब हम हैंड राइटिंग को करते हैं ना, देयर आर सो मेनी ट्रेड्स। अभी यहाँ पर सिग्नेचर हो सकता है आपने किस तरीके से लिखे, तो सिग्नेचर इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आई एम डूइंग द एनालिसिस ऑफ द सिग्नेचर। आपके सिग्नेचर का हो रहा है, राइटिंग के अंदर देखिए तो हो सकता है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूजन भी कहीं कहीं पे अप्लाई करता है। तो डाइल्यूट अगर कोई ट्रेट हो रहा होगा तो वो ट्रेट एग्जैक्टली वैसे नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर आपको हेडेक का प्रॉब्लम सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, बट अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो डाइल्यूट करेगा ना उस ट्रेट को, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए All वैष्णवी right, गुप्ता। next one, Vaishnavi Gupta. Are you there, Vaishnavi? Okay. Good evening everyone. गुड इवनिंग। थोड़ा सा जूम करना सिग्नेचर एक बार। ऑलराइट वैष्णवी, आपकी एक तो इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। इंट्यूशन, आभास होना, या आप ये सोचो कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना, यू आर अ क्विक लर्नर टू। कोई भी चीज अगर आपको दिखती है, समझ आती है, तो यू जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट फास्ट। तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट इसके अंदर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इरिटेशन फैक्टर्स भी थोड़े से क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके सिग्नेचर की बात करते हैं यहाँ पर, वैष्णवी आपने अपने सिग्नेचर के ऊपर ये क्या स्ट्रोक बनाया हुआ है? वैष्णवी लिख के क्या बनाया ये आपने? ऐसे ही? Ma'am, it's an S. Yeah. ओके, व्हाई दिस इज एडिशनल एस, if I may ask? Like I wanted to include my father's initial, so I took it as. ठीक है, you have seen father's sacrifice and father's insecurities, and you have somewhere in your mind and your relationship with your father, it's like या ये बोलो कि फादर ने या तो बहुत सारी फैमिली के बर्डन्स लिए, यू नो दैट, एंड यू ट्राई टू हेल्प देम आउट। इसकी वजह से नाउ यू वांट टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो एक एस्पेक्ट इसके अंदर आ रहा है, बट समवेयर यू आर unnecessary, you are taking responsibilities, a lot of responsibilities, and responsibilities आ रही है क्या आपके ऊपर? कुछ कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप? Yeah, मैम थोड़ा बहुत। देखो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला ये ट्रेट आ रहा है ना, यू मे बी अट्रैक्टिंग, कीप ऑन अट्रैक्टिंग इररिस्पॉन्सिबल पीपल इन योर लाइफ, और कहीं पर भी आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, एंड यू विल गेट थोड़ा प्रॉब्लम उसके अंदर। एंड इनफैक्ट देखो, आपका क्रिएटिव माइंडसेट बहुत अच्छा है। व्हेन यू गो इन पब्लिक यू गेट अ प्रॉपर शाइन ऑन यू। शाइन इन द सेंस पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ऑपोजिट जेंडर भी आएंगे और वैसे भी आएंगे। इनफैक्ट यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, चाहे लुक से आए, चाहे आपके कुछ पर्सनालिटी ऐसा हो उससे आए, या फिर हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी से आए, बट पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। एंड व्हेन दे गेट अट्रैक्टेड, तो वहां पर जाके आपको पता चलता है कि यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो इनफैक्ट यू आर नॉट एबल टू शो योर ट्रू पोटेंशियल, ट्रू थिंग आपका नहीं निकल के आ रहा है। अब वहां पर जाके एकदम ग्राउंडेड, या हो सकता है कि यू मे बी कीपिंग सो मेनी थिंग्स इनसाइड, यू आर नॉट एबल टू से इट, बट डीप डाउन यू नो दैट यू वांट टू डू योर चॉइस ऑफ थिंग्स। अब अपना सिलेक्शन करना है, और वहां पर उस सिलेक्शन के अंदर इट्स लाइक मदर के साथ कनेक्टिविटी तो ठीक है, बट येस कमिटमेंट्स एंड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आप अपनी चॉइस के ही करना पसंद करोगे। एंड हो सकता है कि आपको कभी ये सुनना भी पड़ा हो कि पीपल कॉल यू एज अ कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, क्या ये अपने बारे में सोचती है, डिस्पाइट ऑफ यू डूइंग अ लॉट, बट स्टिल पीपल से इट बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू प्रॉपर्ली। क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेड्स ही ऐसे बने हुए वेयर दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी पार्ट इज मिसिंग हियर। कनेक्टिविटी विद द फैमिली, और फैमिली के साथ, मदर के साथ है ठीक है, लेकिन फैमिली के साथ या फादर के साथ, चाहे भले ही आप उनका सेक्रीफाइस या और बहुत सारी चीजें आपने महसूस करी, बट स्टिल देयर इज समथिंग, हो सकता है कि कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आपके फादर के साथ हो यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, अपनी जरूरत की सारी चीजें आप पूरी हो जाती है किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर कुछ चाहिए तो वो समवेयर कहीं से भी समहाउ वो कंप्लीट हो जाती है, वो आपका काम निकल जाता है। यस वैष्णवी? Yes, ma'am, exactly. It was so true.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes. Okay, moving on to the next one. Who is it? Diksha Avasthi. Diksha Avasthi. Yes, ma'am. Alright. और दीक्षा ये जो आपने बनाया लास्ट में यही आपके सिग्नेचर ऊपर भी यही है सेम? Yes, ma'am. देखो दीक्षा अभी आपके एट प्रेजेंट माइंड में ना फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चल रहा है। ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, एंड चलो अपने घर वालों से ही पूछ लेता हूँ। तो इट्स लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, फ्लक्चुएशन। बट यस, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आर वेरी गुड, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी है, तो ये एक अच्छा पार्ट आ रहा है इसके अंदर। एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ कोर्स अच्छा है। यू आर आल्सो स्टूडेंट? Yes, ma'am. Okay, you are also trying to overcome with any relation or anything, any relationship, कुछ ऐसा है, something you are trying to overcome with that. तो थोड़ा सा zoom करना है इसको please. Open minded personality हो, and if with logics, if anything is being told to you, आप उसको समझते हो and you just try to implement it, and you are a selective listener हो। अगर आपको 10 चीजें बोली गई, आपको लगता है कि if only 2 works for me, so you just keep, you know, उसी की दो चीजें ही आपके मतलब की है, तो you just keep that thing only, कि I am limited with those 2 things. And यहाँ पर एक और भी आ रही है, you are a freedom lover. You do not want in your comfort zone, you do not want to give entry to anyone. जो आपको करना है जैसे करना है, somebody say anything, so out of regard and respect you may be doing it, but in actual you are a freedom lover, you need your own freedom. अगर किसी रिलेशनशिप में या if you are seeing somebody, तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिफरेंस दिखेगा, कनेक्टिविटी होगी भी, एक पल में झगड़ा, एक पल में मान गए, एक पल में झगड़ा, एक पल में मान गए, तो ऐसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड ग्रजेस फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर चल रहे हैं यहाँ पर, सेम जेंडर भी चल रहे हैं यहाँ पर। एंड दूसरी बात, सिबलिंग राइवलरी या सिबलिंग्स के साथ भी कोई ना कोई इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ सोशल एटमॉस्फेयर में, सोशल सोसाइटी के अंदर या पब्लिक में अगर बोले तो यहाँ पर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्लेसेस होंगे यू डोंट फील कंफर्टेबल, या कुछ सेट ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो अगर कहीं गैदरिंग हुआ, जाना हुआ, तो यू ऑलवेज से कि नो आई विल नॉट गो देयर, मैं उस जगह नहीं जाऊंगी, दूसरी जगह ले चलना। एंड कम्युनिकेशन में हार्श, ब्लंट हो जाते हो, विच यू डू नॉट इंटेंड, बट हो जाता है ये, है ना? Yes, ma'am. केक पेस्ट्री बहुत पसंद है, केक पेस्ट्री, डोनट्स? Yes, ma'am. I'm a food lover. ठीक है, थैंक यू सो मच दीक्षा। Thank you, ma'am. देखो यू हैव मनी बैग्स, और वो मनी बैग्स ना रॉन्ग प्लेसेस पर आ रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्राची। All right, Prachi, you there? प्राची। ओके नेक्स्ट, लास्ट में देख लेंगे जो आएंगे। हिमालय बंसी। Yes. हिमालय? Yes, ma'am. Okay. You have scanned this, Himalaya? Yes, ma'am. Okay. And you have written towards the lower side of the paper, not on the top, and just scanned it and sent? No, ma'am. Actually, I've written it on the top, but मैंने top कर दिया था उसको scan के बाद. अच्छा. It is written on an A4 size sheet also. All right, ठीक है. Okay. देखो यू आर ऑल्सो कनेक्टेड अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन अच्छा है, दैट्स देयर, लेकिन फिर भी मोस्टली स्टूडेंट्स का ऐसा ही होता है, तो नो वंडर यहाँ पे मेजरली स्टूडेंट ही हैं, तो दैट्स फाइन। बट यू आर एन अटेंशन सीकर, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, यू लव सीनिक ब्यूटी। अगर आप कहीं ऐसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, यू एंजॉय अ लॉट, कोई ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे बहुत सारी कलरफुल चीजें, फ्लावर्स हैं, गार्डन है, यू एंजॉय अ लॉट। सीनरीज देखना, माउंटेन्स देखना, यू लव।
इफ यू गो सम आइसक्रीम पार्लर या पेस्ट्री पार्लर पे अगर चले जाओगे तो यू जस्ट लव सी, हो सकता है कि आप स्वीट ये सारी चीजें आपको खाना भी पसंद हो, चॉकलेट्स भी आपको पसंद हो, तो ये एक पार्ट इसके अंदर आ रहा है। एंड दूसरा पार्ट कि ओके देखो आपने अपने जो सिग्नेचर्स है ना उसमें कुछ अपने लिए कुछ ऐसे हेल्थ स्प्रेट को इसके अंदर ऐड कर दिया है। हेल्थ स्प्रेट इन द सेंस समथिंग व्हिच इज डिस्ट्रक्टिंग यू ओनली। तो ये डिस्ट्रक्शन जो है ना, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये चल रहा है। सेल्फ सैबोटेज ट्रेट्स इसको बोलते हैं कि यहाँ पर नोबडी इज हार्मिंग यू, it's like why I am trapped, so you are trapped, you are not able to grow, you are not able to progress in your life। तो वो progress नहीं हो रही, somewhere you are stuck and stuck with in some kind of situation कि आप कोशिश करने के बाद भी you are not able to come out, anchors डले हुए हैं। तो those anchors वो आप निकाल ही नहीं पा रहे, it's so deep। और वो आपका जो नॉलेज, जो आपका विजडम, जो आपका इंटेलिजेंस लेवल है उसको भी ग्रो करने नहीं दे रहा। तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अदरवाइज माइंड में हमेशा चल रहा है कि ये हमेशा चलता रहता है कि यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू विल सेल थ्रू विद दिस सिचुएशन, बट स्टिल हाउ। तो यहाँ पर क्योंकि आपने डिस्ट्रक्ट कर रखा है अपने फ्यूचर गोल्स को, फ्यूचर प्लानिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम कर रखी है। अगर आप अपने बिजनेस या जो भी आप काम करते हो तो वहां पर आप सक्सेस पा सकते हो, बट वो डिले होगी सक्सेस, दैट इज अ डिलेइंग ट्रेट यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है। एंड दूसरी बात इरिटेशन फैक्टर्स, जो नए लोग, जो भी लोगों से आप मिल रहे हो ना, तो समवेयर यू जस्ट पॉइंट आउट कि ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो यू आर नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन जिनसे भी आपको मिलना है या बात करनी है। तो राइट काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन। एंड वर्क में या कहीं पर भी आपका काम अच्छा है, जो भी काम आप कर रहे हो, तो यू आर डूइंग गुड वर्क, बट उसका एप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, सेल्फ फ्रस्ट्रेशन, इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा होंगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन के ट्रेट्स भी इसके अंदर आ रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें होने के बावजूद भी स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट। Yes, Himalaya, anything you want to say here? Yes, ma'am. I agree with this. I agree with a lot of things and I disagree with a lot of things. But yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Who is next? Achal. Achal Rana. Are you there? Achal Rana. Achal. Anchal. How do I pronounce this? Anchal. Anchal. Okay, Anchal Rana. I think she's not here. Okay. No problem. Aritra Bhaumik. Aritra Bhaumik. Yes, ma'am. Very good evening, ma'am. Very good evening. All right. Aritra के सिग्नेचर पे थोड़ा सा फोकस लगाएं। अच्छा अरित्रा, you have created this design अपने अपने इस A4 शीट के अंदर जो बाउंड्री आपने जो बनाया है, you have done it? No, ma'am. I have write it on a normal copy, and I do this line with my ruler. Oh, so you made this with and a I ruler. have. Yes, ma'am, and I have write it down in blue pen, and I scanned it and I sent it to here. Got it, got it. So you made this a proper canvas, and on that canvas you have just written it, right? I consider it that way. Okay. थोड़ा सा top of the page दिखाएंगे आप मेरे को? I just want to see that what kind of faces he had made. ठीक है, अभी नीचे आ जाते हैं। Okay, Aritra, the thing is you have an artistic approach. Social circle, maybe you just show somewhere your presence. When you are present somewhere, because of your creativity, you never get anything कि लोग आपको recognize नहीं करें. Maybe could be possible you may be good in singing या कुछ artistic चीजें करने में, so people get attracted, and some if anybody knows that तो वो आपको जरूर पॉइंट करते होंगे कि यू आर गुड इन दैट एंड उसको बोलो, तो यू डू दैट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट्स लाइक आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे लाइफ में यू आर गुड, लेकिन लाइफ में जो हायर लेवल के गोल्स अचीव करने हैं
यू हैव अ विजन इनसाइड, बट उस गोल को अचीव करने के लिए इट्स लाइक आप नहीं कर पा रहे। वो सेल्फ वर्थ वाली जो सिचुएशन है ना, वो सेल्फ वर्थ वाली नहीं आ रही है कि कैसे आप उसको रेस करोगे। एंड यहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है, यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ नॉलेज, पर कैसे एग्जीक्यूट करें, एंड दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द एग्जैजरेशन साइड, एग्जैजरेशन में जा रहा है ये। हेड आपका हेड ओवर हार्ट आ रहा है, तो हेड ओवर हार्ट में क्या होता है सिचुएशन कि आप ये सोचो कि आप अपने आप को ज्यादा अहमियत दे रहे हो एज कंपेयर टू योर वर्क, जो आपको वर्क करना चाहिए प्रोफेशनली, जो आपको करना चाहिए, तो उसके ऊपर आपका फोकस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, या उसके ऊपर आप उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ। ये ऐसे होता है ना कि कई बार हम इट्स नॉट रिलेटेड टू यू, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। इट्स लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और वहां पर आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरा फेस कैसा लग रहा है, हाउ आई एम लुकिंग, सो आई एम जस्ट गिविंग दैट थिंग। तो अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना एज कंपेयर टू वर्क, या अपनी फैमिली को या प्रोफेशन को वैसे लेना। और यहाँ पर आपके प्रोफेशन में भी आपको प्रॉब्लम, अगर आप कुछ कर रहे हो तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड दूसरी बात ये कि द काइंड ऑफ पर्सन यू आर इनसाइड, आप जिस तरीके की पर्सनालिटी हो वही आप पब्लिक में रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने खुद के अंदर कुछ और है और बाहर में कुछ और शो कर रहे हो। द काइंड ऑफ पर्सन यू आर फ्रॉम इनसाइड, यू आर ऑल्सो शोइंग दिस टू आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है, क्लैरिटी इज देयर। तो जो चल रहा है वो वैसे ही है, लेकिन द थिंग इज कि नहीं मिल पा रही हैं चीजें, और यहाँ पर जो भी काम आप कर रहे हो एग्जीक्यूशन पार्ट आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन के रूप में आप लोगों के सामने आ रहे हो। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपका अच्छा है, फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का चल रहा है, अपने कुछ गोल्स आपने सेट किए होंगे एंड यू आर जस्ट गोइंग थ्रू, बट विदाउट एनी सपोर्ट, डिस्पाइट ऑफ यू बीइंग विद योर फैमिली, बट आप चाहते हो कि वॉट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, अपनी सपोर्ट अपने दम के ऊपर कुछ अचीव करूं अपनी लाइफ में। एंड कई बार ऐसा भी होता होगा कि यू मे बी पुशिंग पीपल अवे, जैसे कोई अगर हेल्प करने के लिए आ भी रहा है ना, तो यू जस्ट पुश देम, नो आई डोंट वांट इट, आई विल डू इट माई सेल्फ। या अगर कोई आप स्टडी भी कर रहे हो तो उसके अंदर भी यू जस्ट टेल कि मे आई हेल्प, अगर कोई पूछेगा तो आप उसको बोलोगे कि नो आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो ये वाली भी चीज चल रही है, अपने कामों के लिए भी ऐसा चल रहा हो सकता है। फोकस आपका अच्छा है, आप बहुत अच्छे से फोकस होके काम कर रहे हो, बट अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर रहे हो, छोटे छोटे टारगेट्स आपने सेट किए हैं, हाई गोल्स हाई टारगेट्स नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सक्सेस लेवल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो ये यहाँ पर आपका एनालिसिस होता है। यस अरित्रा। ये सर, मैं आपने जो भी बोला है सब 100% करेक्ट है। अगर कोई हेल्प करना भी आता है ना, तो मैं उसे बोलता कि नहीं भाई, मैं खुद कर लूंगा, कोई बात नहीं। और 100% डेडिकेशन देता हूँ सब चीजों में, जो भी काम अच्छा लगता है मैं 100% देता हूँ। और मैं जो भी काम हायर गोल है, लेकिन मैं जब करना चाहता हूँ ना, तब मालूम नहीं होता नहीं ऐसा। तो यही बात है, आपने जो बोला 100% सही है। थैंक यू सो मच अरित्रा। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द एनालिसिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, नेक्स्ट। All right, next, Shrishti Kamble. Shrishti Kamble. Yes, ma'am, I'm here. All right, thank you for waiting patiently, Shrishti. I know 7 बज चुके हैं, 1 hour का सेशन था। ओके, थोड़ा सा जूम करेंगे आप, इसके सिग्नेचर के ऊपर फोकस करेंगे। सृष्टि, यू आर वेरी पंक्चुअल अबाउट थिंग्स। जो चीजें जैसे करनी है लाइफ के अंदर, बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके। बट यस, बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस, लाइफ में लोगों के साथ कैसे डील करना है दैट बैलेंस, अपनी लाइफ में कैसा बैलेंस करना है दैट बैलेंस, और अपने पर्सनल लोगों से, फ्यूचर में अननोन लोगों से कैसे मिलना है दैट बैलेंस। सो दैट बैलेंस पार्ट इज गुड। पेशेंस लेवल आपका अच्छा दिखा रहा है इसके अंदर। एंड दूसरी बात, अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो, यू आर नॉट अ रिस्क टेकर, दैट्स बैड पार्ट। एंड दूसरी बात ये कि होलिस्टिक अप्रोचेस में, या हो सकता है होलिस्टिक हीलिंग में, या फिर हो सकता है कि कोई आयुर्वेदा की मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन वगैरह में, या कोई एप्लीकेशन ऐसा चल रहा हो, एलोवेरा वगैरह भी यूज करते हैं ना, तो थोड़ा स्किन केयर, तो ऑल दोस थिंग्स यू आर गिविंग फोकस टू दोस थिंग्स। ऑलराइट, एंड इसके अलावा अगर यहाँ पर बोले तो आपके सिग्नेचर्स ये बता रहे हैं कि यू हैव गुड माइंडसेट,
good energy, but देखो हार्मोनल इम्बैलेंस की एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है फेस कर रहे हो, या फिर अपने साइकिल में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो, या फिर अगर साइकिल स्मूथ चल रहा है तो पेन रिलेटेड कुछ इश्यूज मैसिवली आप फेस कर रहे हो सकते हो इसके अंदर। एंड दूसरी बात ये कि क्लैरिटी, थोड़ा सा अपने आप में अपने आप को जिस तरीके से आप समझते हो, कई बार आपको खुद से फील होता होगा कि मे बी आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, आई नीड टू एक्सप्लोर मोर, तो वो वाली एक सिचुएशन इसके अंदर आ रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म अच्छा है। द सिग्नेचर अगर बात करें तो प्रोग्रेस, या आप फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर की तरफ बढ़ने वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग आ रहे हैं। इनके अंदर आप अपनी चॉइस, अपनी खुद की चॉइस से आप काम करना चाहते हो, जो भी आपके पास चीजें आ रही हैं, यू जस्ट वांट टू गिव योर ओन चॉइस। कई बार चीजों को लेके थोड़ा सा एडमेंट भी हो जाते हो, कई कई चीजों को लेके दैट आई एम स्टिकिंग टू दिस थिंग ओनली। अपनी मदर के साथ अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो वो अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है एज कम्पेयर टू फादर। एंड दूसरी बात ये कि यहाँ पर इनसिक्योरिटीज भी सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज यू हैव इन योर लाइफ, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड यू मे ऑल्सो बी अट्रैक्टिंग ऑपोजिट जेंडर, तो वो अपोजिट या कुछ प्रपोजल्स आ रहे होंगे, तो ये शॉर्ट टर्म रिलेशंस की अगर बात करते हैं तो अगेन शॉर्ट टर्म रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स उतने ज्यादा स्ट्रांगली नहीं जा रहे हैं, तो किसी के साथ भी हो तो वो लॉन्ग टर्म में एक स्मॉल फेस, स्मॉल टाइम स्पेंडिंग विद पीपल वो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर आप किसी के साथ रहते हो तो वहां पर आप फेस करते हो प्रॉब्लम्स को। मैच्योरिटी लेवल अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अननेसेसरी कुछ वरीज भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ वरी आ रही है, कुछ इंटरनल वरीज हैं जो आप पता नहीं किस किस माइंडसेट से आप उसको फेस कर रहे हो। अपनी हेल्थ, या हो सकता है कि फैमिली मेंबर की किसी हेल्थ की वजह से भी आप थोड़ा वरिड यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, वरी ट्रेट्स इसके अंदर आ रहे हैं। सो एक बार में एक ही चीज को आप फोकस करके चलते हो, एक बार में ऐसा नहीं कि कई लोगों की आदत होती है ना मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम कर लेते हैं, बट यू फोकस वन टाइम वन टास्क, कंप्लीट दैट एंड देन टेक अनदर थिंग, वो एक आपका एस्पेक्ट इसके अंदर चल रहा है। ऑटोमेटिकली यू गेट अटेंशन ऑफ पीपल, तो वो भी एक पार्ट इसके अंदर अच्छा आ रहा है। यस सृष्टि, मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, quick, next. How many we are left with? I think this one and Jupiter's handwriting and signature. All right. I think we missed that above. So no problem, no problem. Okay, who is it? नाम नहीं दिखा है, so anybody अगर आपका है तो फिर no problem. जिसका भी signature, if that person is present here, we can just do the analysis without name, no problem. I think we'll move to Jupiter's. Yes, please. Handwriting. Yeah. ऊपर जाओ, ऊपर कहीं पे था। 5 signature ऊपर था। Jupiter, are you there again? I saw you join. All right, we'll find your signature right now. I think maybe हाँ यहाँ पे Jupiter. जुपिटोरा ककाती, ओके ओके, जुपिटोरा के सिग्नेचर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जुपिटोरा अभी जो स्टेटस चल रहा है ना, तो यू आर जस्ट लिटिल, आप अपना थोड़ा स्पेस, यू जस्ट वांट योर ओन स्पेस, अ लिटिल स्पेस यू वांट, तो उस स्पेस की तरफ आप जा रहे हो, थोड़ा सा नीचे की तरफ, नीचे वाले सिग्नेचर्स आपने को दिखाएं। जुपिटोरा एक बात बताओ मेरे को, समटाइम्स यू गेट दिस फीलिंग अपनी लाइफ में कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ में क्या रखा है, जीना कैसे कहते हैं, मतलब दोस काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक थिंकिंग, डिस्पाइट ऑफ यू ऑलवेज बीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑप्टिमिस्टिक, लुकिंग हाई, बट स्टिल एट टाइम्स यू थिंक दिस वे दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ऐसा कुछ फील करते हो आप? Sometimes, but not like every day. Of course, every day it's perfect. ये show कर रहा है आपका एक positive outlook, but something happened in your life that is like an irreparable mistake. Something happened which you feel from inside that this can't be rectified. ये कभी सही नहीं हो सकता. So this is something you have that impression, and this is something which is
मेकिंग यू फील कुछ कुछ अजीब तरीके की फीलिंग हो सकती है, हो सकता है कि वो आपका फीलिंग का अपना अलग तरीका हो सकता है कि you may be feeling anxious about that or stressed about that, or whenever you think about that particular incident तो भी आपको थोड़ा सा अजीब फील होता हो, तो that kind of thing you have, it is reflecting in your writing. And जो आपके सिग्नेचर हैं दैट शोज कि ये आपका एक आर्टिस्टिक अप्रोच को बताता है, एंड दूसरी बात ये कि ये आपके बहुत सारा एग्जैजरेशन, यू नीड पीपल अराउंड, आपको लोग चाहिए, इट्स लाइक यू फील गुड व्हेन यू आर कनेक्टेड विद पीपल, चाहे थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करें लेकिन रोज नहीं बात करें, बट यू फील गुड। आप अगर फैमिली में भी हो तो यू जस्ट फील लाइक कि सब लोग साथ में हैं, या आपके फ्रेंड्स चाहे रोज बात नहीं करे बट स्टिल यू वांट, एंड सम ट्रेडिशनल वैल्यूज, अपने फैमिली के कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज उनको आप हमेशा ध्यान रखते हो, उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को आप फॉलो करने की कोशिश करते हो। दूसरा, अपने रिलेशनशिप में अगर पार्टनर है कोई और इफ यू आर लुकिंग समबडी, तो वहां पर रिलेशनशिप में जो क्रिएटिव एस्पेक्ट या फिर कुछ नए नए इनोवेशन करना या किसी भी तरीके से यू जस्ट मेक थिंग्स लाइवली, तो वो लाइवली करके आप उसके अंदर चलने की कोशिश करते हो, बट यस यू फील सफोकेटेड अपने फैमिली मेंबर्स, वर्क प्रोफेशन या पार्टनर के साथ और अपने साथ, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस विद आर्टिस्टिक अप्रोच, सब कुछ अच्छा करने के उसमें आप थोड़ा अपने आप को नजरअंदाज कई जगहों पर आप कर रहे हो, और ये आपके खुद की हेल्थ पे, आपके अपने लोगों के साथ थोड़ा आपको ट्रिगर कर रहा है। कुड बी पॉसिबल आपको हेल्थ हाल फिलहाल में आया हो, या फिर हो सकता है कुछ टाइम से आप अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ ट्रेसेस आपको यहाँ पर लग रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, क्रिएटिव माइंडसेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टोरेज भी बना रखी है आपने अपने माइंड के अंदर खुद, लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, एंड इनफैक्ट यू आर गोइंग इन अ लूप इन द सेंस कि आप जो काम आप कर रहे हो यू आर अगेन ट्रैप्ड इनटू दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन वैसी की वैसी चल रही है। तो यू आर सिंगल Jupiter? No, ma'am. You are married. Is it a love marriage? Love arranged? No, not married. Achha, not married. Okay. In relationship with someone. All right. Jupiter, the thing is, यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में if you want to proceed further, you need to leave certain things, some grudges, some issues, some emotional traumas or emotional things which you have gone through. You just need to leave that, because every now and then it's like you are just keeping that in a loop, and you bring things down. अपनी energy को, अपने enthusiasm को you just pull down yourself. तो वो एक problem यहाँ पर आ रही है। Physical level पर जो आपने challenges face किए, या अपने फ्यूचर में जो अपने चैलेंजेस फेस किए, दैट इज गिविंग यू सम प्रॉब्लम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी चीज अगर आप शुरू करते हो, जस्ट ट्राई टू गिव थोड़ा पास्ट आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा हैवी कुछ रखा है, पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए वो निकाल नहीं पा रहे, यू आर वेरी सेंसिटिव एंड यू आर जस्ट कीपिंग दैट। अपने वेट मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए, या फिर एक्सरसाइज अगर आप कुछ कर रहे हो, योगा या एरोबिक्स अगर कुछ ऐसा कर रहे हो, तो यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, और यू मे बी थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग समथिंग। तो ये आपका सिग्नेचर का एनालिसिस है। एनीथिंग यू वांट टू से? No, ma'am. Like I'm actually surprised कि इतने सारे चीजें कैसे मतलब सच हो रहा है, आप तो बोल रहे हो। Yeah, I am like very anxious about my future क्योंकि past में there are so many incidents which were happened to me. So I think a lot about those two incidents, and I cannot like get away from those things. So yeah, you are right, and I am still trying to like think about my future, not about the past. So that's it. Thank you, by the way. Thank you so much. Thank you so much. All right. I just want to say, Bhashpati, can I say something? Yeah, I mean, actually, we are left with one more signature, and अच्छा ठीक है। Let me just bring the charger, my laptop battery. Just a all moment. right. ऋषभ इसके नीचे ही है, जूम आउट करने को। नहीं तो शायद ऊपर होगा, इसके एडजस्टमेंट ही था।
I think this one, Jagriti Acharya Chaudhary. Are you there? If not, we'll wrap up the session now. Okay, no, she's not there. All right. I have an upcoming workshop on 28th, that is on Mankaa Academy's platform. And this workshop is just to know about the power of the alphabet. So I'm just going to tell the meaning of all the alphabets. It's like A to Z alphabets, right? So that you will understand how these are keeping importance. So बस एक 1 hour का session है. If anybody want, they can just join. उससे related, of course, हमारे आगे कुछ sessions होंगे. If anybody interested, तो वो कैसे उसको involve कर सकते हैं? तो we are just going to tell that. So it's an introductory thing. अगर कोई भी interested होंगे तो वो भास्वती को contact कर सकते हैं. I'll send her the details. All right. Or do you want to share the form right now? I'll anyway share it on all the groups, but do you want to share it right now? I do not have this access here on. All right, so I'll do it. I'll do it. Okay, then I'll share it. Yes. Thank you so much. कोई और अपना कुछ comments बोलना चाहेंगे, कुछ भी बोलना चाहेंगे, so that we can just wind up final thing. You'll get your e-certificates once you fill out your feedback form. There's a form in the chat box. Just fill that out. All right. So thank you, Malvika ma'am. It was a great session. I'm still shocked actually. Actually, it is just the science of alphabets. We don't read the content at all. It's the graph, how you are making the strokes. I actually have this question. Do you read the words and then decide ki kaisa hai? That's the reason I just asked. Write about then any I topic. have one question. How do you do it? All right. Handwriting and signature is a study. When we study, there are so many things that how you are writing on a paper, how you have just, as I mentioned, that plain paper is your 24 hours. How you are just organizing your 24 hours by writing the alphabets, whether every person, just unlike our fingerprints, no, are writing, twins writing, two siblings, twins, jo hote na, unki bhi writing that does not match at all. Why it happens? Unlike our biometrics, जैसे हमारे retinas हो गए, tongue impressions हो गए, thumb imprints हो गए, this does not match. Two handwriting भी किसी भी person की match नहीं करेगी कभी भी किसी भी circumstances में. So it's like when it is not matching, the thing is how we are reading it, because it is your subconscious mind. हम अपनी surrounding से, अपने understanding से, बचपन से we are just learning these letters. And when we are learning, the teacher taught us the way she made A or B. We did not, learn it that way. हमने A का size change कर दिया. Maybe we are just writing A, but maybe I am just choosing the size smaller. You may be choosing the size little, थोड़ा सा बड़ा, bigger one. और आपने lower zone के जो letters हैं, उन zones के letter को आपने अलग कर दिया. You might see that few people write little tilted towards inside, inward tilted, rightward slant. So those things, these matters, and the size formation. Then again, there are, apart from that, these are the Gestalt traits. What we say is कि writing की पूरी compile है. Whether you write in English language or any other language, we can be able to do the analysis. It is just कि आपके writing कैसा लिखा है, उसके अंदर क्या है. तो writing के अंदर है क्या? Writing के अंदर आपके lines हैं, circles हैं, loops हैं, dots हैं, and bars हैं, slashes हैं. That's it. These form your letters, and this is the combination. Lines जो होती है, we call it father figure, and जो circle formations होते हैं, वो हम उसको बोलते हैं mother figure. तो जो circle and lines हैं, उन्हीं से हमारी पूरी line बनी है. When you write straight, तो वो आपकी straight line, वो आपका base आपकी father figure से depict कर रहा है. When you are writing in a letter, C letter, O letter, when you are writing this, the curvy formation or the garland formation, the connections you make, that's your mother figure. So the combination of these letters, how impact, what kind of impact you have got. So हमारी जो nurturing होती है ना, तो 0 to 14 years, that is the very crucial time of our growth. उस growth के time में mother age is something wherein we need entire concern. वो उनका पूरा focus attention हमें चाहिए होता है. Father के time पे हमें father का चाहिए होता है. Then only we are ready to face the battle of our life. ये life is a battlefield. और उस battlefield में आपको अपनी writing, अगर आपने उसको control कर दिया, तो you have control of all your indriyas, all your chakras, all your stars, all your planets. I say it this way. This is a direct medicine. I call it. हमारी writing में कुछ भी नहीं है. Everything is alphabet and number in our life. When we see anything, हम
हम अपने घर का नंबर देखें अल्फा न्यूमेरिक, कार नंबर अल्फा न्यूमेरिक, जीएसटी, पैन नंबर, फोन नंबर, एवरीथिंग अल्फा न्यूमेरिक, कुछ ना कुछ नाम, हमारा जो नाम है इंग्लिश अल्फाबेट्स, डेट ऑफ बर्थ नंबर्स. सो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. और इस अल्फाबेट एंड नंबर की फ्रीक्वेंसी को if we align, nobody can defeat us. If you would have met me 6 years back, I was not this kind of personality. I never thought of that I'm going to conduct sessions so confidently. I'm going to start my own academy. I never thought of. I belong to different field altogether. But yes, I have created those strokes so that I am here in front of you. And thank God it shows graphology. Yes, graphology and numerology, that have completely changed my life. As I mentioned, the 360-degree change I got from graphology and numerology. Numbers and alphabets, they make a lot of difference. Lot of difference. Nothing else is required. If you just take the charge of these things, nobody can defeat. Whenever you want, whatever you want, money चाहिए, relationship चाहिए, आपको सबके साथ अच्छा चाहिए, health चाहिए, you can always get it. Whatever you want, we can create those strokes. All right. Thank you, ma'am. I'm actually already getting requests for another session, so I hope to organize one soon. Sure. Thank you. Thank you so much. God bless you all. Take care.